Hello students, today we will discuss about the topic L hospital rule. So firstly we will see where L hospital rule can be applied and where it should not be used, because there are so many misconceptions about L hospital rules. So हम लोग देखेंगे किस फंक्शन में किस टाइप के लिमिट में ये एल हॉस्पिटल रूल यूज किया जाना चाहिए और कहाँ पे ये ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस बिना एल हॉस्पिटल रूल के बहुत जल्दी सिंप्लीफाइड हो जाते हैं और कहीं कहीं पे एल हॉस्पिटल रूल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक नंबर बहुत सारा मिसकंसेप्शंस हो जाता है जिसमें कुछ फंक्शंस में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं और उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में उन्हें लगता है कि एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, बट एक्चुअली में वहाँ पे लगता है। सो विल सी व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल। सो एल हॉस्पिटल रूल इज द वे टू सिंप्लीफाई इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। इट डज नॉट डायरेक्टली इवैल्यूएट but only simplifies the evaluation if used properly. Used properly should be noted here, because if you don't use properly you will get mixed up in the questions and time will be taken very much. So we will see where it should be used and where it should not be used. So and most importantly, every question of limit can be simplified without using the L hospital rule, because L hospital rule is only like alternative, and every limit of every question of limit L hospital rule can be avoided. But in competitive examination point of view, L hospital rule is very much applied. Okay, so it is only the simplified version of cancellation process where 0 by 0 form and infinity by infinity form are encountered. So we will see the definition of the L hospital rule. What is the L hospital rule exactly? So L hospital rule, statement of L hospital rule is, if limit x tends to alpha fx upon gx is where limit x tends to alpha f of x is equals to 0 and limit x tends to alpha g of x is equals to 0, or limit x tends to alpha fx tends to plus minus infinity and limit x tends to alpha g of x tends to plus minus infinity, and sign of plus minus do not matter. That means f of x may tends to infinity and gx may tends to minus infinity. So this is the condition. Like if fx tends to 0, then gx must tends to 0, and if fx tends to infinity, or more precisely plus minus infinity, then gx must tends to plus minus infinity. Then this limit is equals to derivative of f of x and derivative of g of x. So after seeing this derivative of f of x and d by dx of gx, that means derivative of gx, हम लोग के दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि f of x डेरिवेबल होना चाहिए और g of x डेरिवेबल होना चाहिए, but here derivative of f of x and derivative of g of x should be only defined
in left hand neighbor and right hand neighbor of fx and gx. That means fx may not be derivable at x equals to alpha and gx may not be derivable at x equals to alpha. That means fx and gx both are not derivable at x equals to alpha. Then also we can apply the L-Hospital rule. Okay, so we will see examples of the L-Hospital rule. Okay, so एक बहुत ही पॉपुलर लिमिट है sin x divided by x, limit x tends to 0, and all the students who are preparing for JEE Main and JEE Advanced know that this limit is equals to 1. So we will see that how we can apply the L-Hospital rule in this calculation of limit, and we will also see that how we can solve this limit without using L-Hospital rule. So firstly we will see L-Hospital rule. So according to L-Hospital rule, we will check first in which indeterminate form this limit is. So if you apply x tending to 0, the sign 0 will tend to 0 and denominator will also tend to 0. So that means this is 0 by 0 form. So according to the statement of L-Hospital rule, if we encounter 0 by 0 form or infinity by infinity form, then this limit is equals to limit x tends to 0, derivative of sin x, that means cos x, and divided by derivative of x, which is equals to 1. That means this limit simplifies to limit x tends to 0, cos of x, and the disease in the concept of calculus, disease is used where we encounter indeterminate form, because in indeterminate form we cannot define a definite value. So this disease is actually cured. That means indeterminate form is eliminated. So we can directly put the value of limit. So this limit will be cos of 0. That means it will be equals to 1. Okay. Now we will see how we can. Okay students, तो हम लोग देखते हैं इस लिमिट को और कैसे प्रूव किया जा सकता है, दूसरा मेथड और क्या हो सकता है. ओके, तो एक मेथड है जो बहुत ही फंडामेंटल मेथड है, वो ज्योमेट्री वाला है ना. सर्कल के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर तुम लोगों ने देखा होगा. बट एक और मेथड जो हम लोग यूज कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सीरीज एक्सपेंशन मेथड. So according to that method, expansion of sin x, because sin x is not an algebraic function, it's trigonometric function, and in series expansion method we convert every trigonometric function in algebraic form. So sin x का expansion क्या होता है? x minus x cube by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial and so on, and divided by x. So जैसा कि हम लोग 0 by 0 फॉर्म में ऑलवेज यूज करते हैं कि कॉमन फैक्टर को कैंसिल करता है ना. 0 by 0 फॉर्म में एक ही मेथड होता है जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर सकता है. तो इसमें अगर x को कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा 1 minus x square divided by 3 factorial plus x to the power 4 divided by 5 factorial minus x to the power 6 divided by 7 factorial and so on divided by x. So this x will get cancelled and we will be left limit equals to 1 minus x square divided by 3 factorial plus x to the power 4 divided by 5 factorial plus minus
x to the power 6 divided by 7 factorial. And now जो बीमारी था उसका इलाज हो चुका। बीमारी में लिमिट में हम लोग बीमारी में से उस सब में यूज करते हैं जहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसके चलते इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे x 0 को टेंड कर रहा है, मींस कॉमन फैक्टर x है ना। जैसे x टेंड्स टू अल्फा होगा तो कॉमन फैक्टर x माइनस अल्फा होगा, ठीक है। तो x को कैंसिल होना ही था, है ना, एक से ज्यादा बार कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही था, डिनोमिनेटर में एक x था तो एक कैंसिल हो चुका। इसमें डायरेक्टली हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर सकता है। तो इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो फर्स्ट टर्म विल बी 1 and all the other remaining term contains x, and if you put the value of x equals to 0 then all the remaining term will be 0 and limit will be equals to 1. Okay, so एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, लिमिट x tends to 0 x square divided by e to the power 2x minus 1. Okay, so first we will check which determinate form this limit is. Okay, so पहले x का वैल्यू इस फंक्शन में डायरेक्टली पुट करता है। तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो e to the power 0 minus 1 and e to the power 0 will be equals to 1. So denominator will also tends to 0. That means this is 0 by 0 indeterminate form. So we can apply L'Hospital rule, and this will be limit x tends to 0, differentiation of x square, that means 2x, and differentiation of e to the power 2x minus 1. So differentiation of e to the power 2x will be 2 times e to the power 2x, and differentiation of 1 will be equals to 0. So we are left with limit x tends to 0 and x divided by e to the power 2x. Okay, so now we will check whether the disease is cured or not. So we will put the value of limit here, and we will see that if x tends to 0 then numerator will tends to 0 but denominator will not tends to 0. It is actually tending to 0 by 1 and the limit will be equals to 0. Okay, so now we will see another example where this L'Hospital rule should be used more carefully. Okay, example लेते हैं। जैसे limit x tends to 0 x tends to infinity, limit of x plus cos x divided by x. So पहले हम लोग इसका इनडिटरमिनेट फॉर्म पता करते हैं, किस इनडिटरमिनेट फॉर्म में ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसमें लिमिट अगर पुट करो x का तो ये हो जाएगा इंफिनिटी प्लस cos इंफिनिटी, एंड दिस cos इंफिनिटी वैल्यू विल बी between minus 1 to 1. So infinity plus a quantity which is between minus and 1 will tends to infinity, and denominator will also tends to infinity. So it is infinity by infinity form. So जैसा कि पॉपुलर बिलीफ है कि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 0 by 0 फॉर्म में आंख मूंद करके एल हॉस्पिटल रूल स्टूडेंट्स अप्लाई करता है। बहुत सारे बुक्स में भी, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ये होता है कि डायरेक्टली 0 by 0 फॉर्म एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आप मूंद करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। बट इसमें देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके क्या होता है। इसमें अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंशन इंफिनिटी 1 minus sin x divided by 1, and after writing in more appropriate form it will be 1 minus sin x. And now if you observe this limit, so the first term is 1 and minus sine of infinity, and the sine of infinity is not a definite number. It will fluctuate between minus and 1. Okay, so this is a random number.
because side infinity will always lie between minus and 1, and this limit do not exist. If you try to solve by this method, you will be stuck after this step. So this limit do not exist. If you use L'Hopital rule, so this limit will cease to exist. Okay. So now, in this method, in this type of limit, we cannot use L'Hopital rule. So, if you see by another method, so you can see if you do not apply the L'Hopital rule, we can easily solve this limit. You see, we can write this limit as this will be 1 plus cos x by x. So now, if you see, if x is tending to infinity, then this quantity cos x by x will always tend to 0. Because this cos x will be a number between minus and 1, and if you divide by a very large number, then this quantity will tend to 0, and the limit will be 1 plus 0 will be equal to 1. And this limit exists. So, if we apply, in this example, we can learn that if you apply L'Hopital rule blindly, then we will be stuck at some questions. Okay. So the first rule is, if you apply L'Hopital rule, then limit should exist. Okay. The final answer should be a definite number, and in another example, we will see where we can apply L'Hopital rule in many various indeterminate form, like 0 into infinity form, 1 to the power infinity form, infinity minus infinity form, and other limit also, other indeterminate form also. गली तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होता है कि L'Hopital रूल 0 by 0 या infinity by infinity के फॉर्म में ही यूज हो सकता है, बट ये मिसकंसेप्शन है। एवरी इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग L'Hopital रूल यूज कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस होता है। जैसे ये वाला फॉर्म अगर चेक करो तो ये 0 to the power infinity वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें से एक 0 to the power infinity होता है। तो जो भी पावर वाला फॉर्म है, सब 1 to the power infinity, 0 to the power infinity, इन सब के क्वेश्चंस में सबसे पहले लॉग लेना पड़ेगा, है ना। तो एज्यूम करते हैं ये लिमिट इक्वल्स टू y। इफ यू टेक लॉग both sides, then this will be equals to log of limit x tends to 0, 1 plus 5x square divided by 1 plus 3x square to the power 1 by x square. And limit का जो थ्योरम होता है उसमें पहले ही तुम लोग पढ़ चुका होगा, that if f of limit x tends to alpha of gx can be written as limit x tends to alpha f of gx. Okay, so if you apply this theorem here, then this will be equal to limit x tends to 0 log of 1 plus 5x square divided by 1 plus 3x square to the power 1 by x square. Now we can take power in multiplication, and this will be equal to limit x tends to 0, 1 by x square times log of 1 plus 5x square divided by 1 plus 3x. So now we can write this limit as limit x tends to 0 log of 1 plus 5x square minus log of 1 plus 3x square divided by x. And now if you check this limit, then this limit is in the form of 0 by 0. इसका मतलब ये जो 0 to the power infinity वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म था
उसको log लेने के बाद 0 by 0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे ही जितना भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर सकते हैं, बट log लेने के बाद या एलसीएम लेने के बाद, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है उसमें अगर एलसीएम ले लो तो वो 0 by 0 में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और इस मेथड की वजह से हम लोग एवरी इंडिटरमिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, है ना? ठीक है। अब अगर 0 by 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट क्या होता है? इधर लिमिट x टेंड्स टू 0, differentiation of log of 1 plus 5x square, and I hope that you are familiarized with the differentiation process. This will be equals to 1 divided by 1 plus 5x square, and now the differentiation of 5x square will be 10 times x minus 1 by 1 plus 3x square into 6x divided by differentiation of x square, that is equals to 2x. Now it is simplified, x tends to 0. This will be 10x divided by 1 plus 5x square minus 6x divided by 1 plus 3x square divided by 2x. So now if you separate this and this, then we will see that this x will get cancelled and also 10 will get cancelled by 2. So we will get 5 by 1 plus 5x square minus 3 divided by 1 plus 3x square. And now indeterminate form has been eliminated, so we can directly put the value of limit, and this will be equal to 5 by 1 plus 0 minus 3 by 1 plus 0. So this will be equal to 5 minus 3, that is equal to 2. Okay. So देखो एक एग्जांपल लेते हैं ना, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन था, लिमिट x tends to 1, x to the power 4 minus 1 divided by x square minus 1 equals to limit x tends to k x cube minus a cube divided by x square minus k square. Okay. So now we will try to solve this limit question by L hospital rule. So if you see carefully, then this limit is in form of 0 by 0, and also if you put the value of x equals to k, then this limit is also in the form of 0 by 0. Okay, so we will apply L hospital rule to both the limit. So we will see that this limit will get reduced to 4x cube divided by 2x equals to limit x tends to k 3x square divided by 2x, and now the indeterminate form has been eliminated and we can directly put the value of limit in the function. So this limit value will be 4 into 1 divided by 2 into 1, that means this limit will be equal to 2. And this side, if you put the value of x equals to k, then this limit will be simplified to 3k by 2. Okay. So now the question was to find the value of k. So this k will be equals to 4 by